ITER Odisha, and for vote of thanks we have Dr. Pranay Kumar Vishasda, postdoctoral fellow from KIT University, Germany. The Joy Radhe Kirtan and the Dhoni will be performed by Professor Orup Roy, Research in Finance and Business Administration, Tezpur University, Assam. So with this, we will start our satsang and the panel discussion. I hope Sri Gaurish Nayak da, you are ready? Gaurish da? Jai Guru Dada. Jai Guru, Jai Guru. So after 2 minutes, we will start the prayer with the conch blowing. Jai Guru. And please spread the message as soon as possible so that everyone can join. Jai Guru. बार बार करो बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है ओहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी धाम की मोहि मोहिमा सुनाई, मेरा अनुराग जगाय के घर पहुँच भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया ओ भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं रहे मन चिरताई। सूरज चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन वसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जस मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जस मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी।
बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देवनित परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार, बार बार बोल जाओ तन मन व्यार चरण पर, क्या मुख लय मैं गाऊं, मेरे करी जस कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पूर्ण धनी नीत करो तुम सेवा, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीनाधीन नाथ, आठ गात मान करो अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और ना दूसरा, अब करो दया पर तकशा, तुम द्वारे अति विलंब क्यों, दया करो मेरे साया, देवो प्रेम के दार, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, दया करो मेरे साया, देवो प्रेम के दार, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देवनित परम गुरु दातार, साधु संग मोहि देवनित परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्नीतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलक्ष्यं न चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुराधिकं तत्त्व न गुराधिकं तप, तदो ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्माता श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुनाथ राधीश गुरु परम दैवोतम, गुरु परम तन्नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशखदं केवलं ज्ञानवृत्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं दत्तमश्चादिलक्ष्यम्, एकं नेतं विमलमचलं सर्वोदि साक्षिवृत्तं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि। जय गुरु। Joy Guru. On this auspicious day of Dol Utsav, a special satsang has been organized by SATSANG VIHAR, Delhi on Global Wave Satsang Seminar. We are here, all of us, we are here to celebrate this special day, this auspicious event. इसमें हमारे जो सुंदर तरीका से प्रेयर किया श्रद्धेय श्री गौरीश नायकता, computer engineering student from ITER Odisha. Today's the Bhog Nivedan has been offered by respected Prashant Kumar Behrada, SPR from Kuwait.
respected Maheshwar Dasda, SPR from Delhi, and respected Prashant Dasda and family from Delhi on the auspicious birthday of his sister. I pray to the lotus feet of Sisi Thakur for the well-being of you and your family. हम लोग अभी ठाकुर जी के पास 2 मिनट नाम ध्यान करते हैं। जो जो हम लोग यहाँ पे है, जो जो गुरु भाई माँ भोग निवेदन किए हैं, सभी के मंगल के लिए हम लोग 2 मिनट नाम ध्यान करते हैं। जय गुरु। जय गुरु। We will start the satsang with the Holy Grantha part. सत्यम शरण बांग्ला में प्रोफेसर तरुण विश्वास फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IIIT रांची, हिंदी में प्रोफेसर संतोष कुमार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IIIT रायपुर, एंड इंग्लिश में डॉक्टर प्रभाकर मोहंती जाजक सीनियर साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली। प्लीज स्टार्ट द होली रीडिंग। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्संग हইতে पाठ। गुरुमुखी होते चेष्टा करो আর মনের অনুসরণ করো না। উন্নতি তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করবে না। বিবেককে অবলম্বন করো আর মনের অনুসরণ করো না। উদারতা তোমাকে কখনো ত্যাগ করবে না। সত্যকে আশ্রয় করো আর অসত্যের অনুগমন করো না। শান্তি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না। দীনতাকে অন্তরে স্থান দাও। অহংকার তোমার কিছুই করতে পারবে না। যা ত্যাগ করতে হবে হয়েও না। प्रोफेसर संतोष कुमार तिवारी। Is there any technical issues? I think we can go ahead. Dr. Prabhakar Mohanty, Jajak, senior scientist. You can go into the English. Joy Guru. Try to be in tune with the master and don't follow your mind. Progress will never leave you. Cling to right judgment and don't follow the mind. Boldness will never desert you. Hold on to the good and follow not evil. Peace will never part from you. Let humility find an abode in the heart.
Vanity will mean nothing for you. Don't long for or be attached to that which must be forsaken. You will be saved from grief. Om peace, peace, peace. Joy Guru, Joy Guru. I pray to the lotus feet of Sri Thakur for the well-being of everyone. May I request Dr. Satswati Dasgupta, Deputy Manager in State Bank of India and PhD from Tripura University, to read the message. Joy Guru Ma. Jaggu, am I audible? Yes, you are audible. Please. Education without character, where education does not collaborate with character and conduct, it is merely an induction of knowledge without an all-round association with facts that make the personality of our inner will grow. Certain peaceful, solitude is compacted service to run a good country after women. A message for you. Joy Guru, Joy Guru. Now we will start the Alochana Prasanga Bangla by Miss Boishakhi Mohapatra Ma. She is a PhD scholar from BHU Banarasi, and the same Alochana Prasanga will be read by Miss Nandita Panma in Hindi version. Miss Nandita Panma is a PhD scholar and junior research fellow from IIT Kanpur. Please start the reading of Alochana Prasanga. Joy Guru. পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গ পাঠ। 11ই আষাঢ় 1347 মঙ্গলবার, ইংরেজি 25/6/1940। সকালবেলায় শ্রী শ্রী ঠাকুর ছোট ঘরে বসে বলছিলেন, ইষ্টভৃতি জিনিসটা আগে ছিল, স্বাস্থ্যয়নী জিনিসটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। স্বাস্থ্যয়নীর ফর্ম স্বরূপটা দিয়েছি, এটা সেদিক থেকে নতুন, আগে থাকলেও বোঝা যেত না। ইষ্টভৃতি স্বাস্থ্যয়নী যদি করে তবে দেখিস দুই এক পুরুষের মধ্যে কি হয়ে যায়, দুই এক পুরুষ পরে বোঝা যাবে। ইষ্টভৃতিতে পুরুষকার ও দৈবের যোজন হয়। এর মানে জানতে চাইলে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, পুরুষকার হলো মোটর পার্ট, শিল্পী অঙ্গ, এবং দৈব হলো সেন্সারি পার্ট, অনুভূতি অঙ্গ। ইষ্টের জন্য কতকগুলি করা হলে করার যে অ্যাকিউমুলেটেড এফেক্ট, সঞ্চিত ফল, তা আমাদের বোধে ধরা দেয়। অর্থাৎ কতকগুলি জানা হয়ে আছে এর ভেতরে, তার ফলে সেই জানা মাফিক পরে কাজ করতে সুবিধা হয়। ইষ্টানুবোধ, অভ্যাস ও প্রেরণা তখন কর্মে প্রবৃত্ত করে, এইভাবে চলে। প্রশ্ন করা হলো, যে কোনো কাজ করা হোক না কেন তারই তো এফেক্ট বা ফল আছে, শুধু ইষ্টভৃতি কেন? শ্রী শ্রী ঠাকুর, যাদের কোনো প্রিন্সিপাল আদর্শ নেই তারা ধরতে পারে না, এফেক্ট ফলটা কাজে লাগাতে পারে না, তাদের এক্সপেরিয়েন্স অভিজ্ঞতা হয় না, কারণ প্রবৃত্তি তাদের নাকে দড়ি দিয়ে যেভাবে চালায় তারা সেইভাবে চলতে বাধ্য হয়। বিচার বিশ্লেষণ করে সত্তা পোষণী রকমে চলতে পারে না। জয় গুরু। प्रातः काल श्री श्री ठाकुर छोटे घर में बैठे हुए कह रहे थे, इष्टभृति पहले भी थी, स्वत्सैनी को मैंने सजाया है। स्वत्सैनी का जो मैंने फॉर्म स्वरूप दिया है वह बिल्कुल नवीन है, पहले रही भी हो तो समझा नहीं जाता था। यदि इष्टभृति स्वत्सैनी करोगे तो 1-2 पीढ़ी में ही देखोगे क्या हो जाता है, 2-1 पीढ़ी के बाद ही बात समझ में आएगी। इष्टभृति में है पुरुषकार और दैव का, इष्टभृति में पुरुषकार और दैव का योजन होता है। इसका अर्थ पूछे जाने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, पुरुषकार है मोटर पार्ट, शिल्पी अंग, एवं दैव है सेंसरी पार्ट, अनुभूतियां। इष्ट के लिए कितना किया गया करने का जो एक्युमुलेटेड इफेक्ट, संचित फल होता है, वह हमारे बोध की पकड़ में आता है, अर्थात इसके माध्यम से कुछ अज्ञात बातों की जानकारी होती है। उसके फलस्वरूप उस जानकारी के आधार पर बाद में काम करने में सुविधा होती है। इष्टानुबोध, अभ्यास और प्रेरणा उसी अनुसार ही कर्म में प्रवृत्त करते हैं, इस प्रकार चलता है।
प्रश्न किया गया, चाहे कोई भी कार्य क्यों न किया जाए, उसका तो इफेक्ट फल होता ही है, इष्टभृति ही क्यों। श्री श्री ठाकुर, जिन्हें कोई प्रिंसिपल आदर्श नहीं है, वे पकड़ नहीं पाते, इफेक्ट फल को कार्य में लगा नहीं सकते, उन्हें एक्सपीरियंस अभिज्ञता नहीं होता, कारण उन्हें प्रवृत्ति जैसी नचाती है वैसे वे नाचने को बाध्य होते हैं, विचार विश्लेषण कर सत्ता पोषणी ढंग से चल नहीं सकते। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर तरीका से हमारा सत्यानुसरण मैसेज एंड आलोचना प्रसंगों से श्रद्धेय दादा और माँ लोग जो पाठ किए। सो वी आर ऑल हियर, all professors. So this is a special satsang organized by SATSANG VIHAR, Delhi. The professors, scientists and research scholars meet on this holy day of Dol Utsav. आज जो सुंदर तरीके से प्रेयर हुआ एंड जो भोग निवेदन की है, रेस्पेक्टेड प्रशांत कुमार बेहरादा एसपीआर फ्रॉम कुवैत, respected Maheshwar Dasda SPR from Delhi, and respected Prashant Dasda and family Delhi on the auspicious birthday of his sister. बहुत ही सुंदर तरीका से ये सत्संग, I request everybody to share the link so that each of us, everyone can have a glimpse of this special satsang. Please spread this link to others so that others can also join. We can move forward. हम लोग अभी ओपनिंग सॉन्ग करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है बांग्लादेश से मिस मंदिरा शाहमा। शी इज ए चीफ साइंटिफिक ऑफिसर। सो आई रिक्वेस्ट मंदिरा शाहमा, सो प्लीज आप एक ठाकुर जी के चरण में एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत कीजिए। जय गुरु। জয় গুরু দাদা, আমাকে শোনা যাচ্ছে? Am I audible? Yes, yes, you are audible. Thank you দাদা। জয় গুরু। उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। অঙ্গতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। সকল পথে বিশাল ভুবনে তোমারি পথ জানি তাহা মনে, সকল পথে বিশাল ভুবনে তোমারি পথ জানি তাহা মনে, যাহা চাই তাই পাই গো সদাই, সেথায় নাই বিরাম। যাহা চাই তাই পাই গো সদাই, সেথায় নাই বিরাম। কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম।
বন্ধন চাই বাধা থাকে তাই মুক্তি চরণে ছেলে বন্ধন চাই বাধা থাকে তাই মুক্তি চরণে ছেলে অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও মুক্তি তখন মেলে অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও মুক্তি তখন মেলে চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই অনায়াসে তুমি দাও তাই আমারে প্রণাম কোটি প্রণাম অনায়াসে তুমি দাও তাই আমারে প্রণাম কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম অগতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণারাম প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম অগতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণারাম প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জয় গুরু দাদা जय गुरु माँ, जय गुरु। रियली स्प्लेंडिड। आप बहुत ही सुंदर ये जो ओपनिंग सॉन्ग was performed by Miss मंदिरा शाह, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर फ्रॉम बांग्लादेश। मैं माँ के और माँ के पूरे फैमिली के लिए ठाकुर जी के चरण में मंगल प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही सुंदर माँ, आप पूरा परिवेश को एक आप सुरीला कंठ से बहुत ही भाव मोहर कर दिए। जय गुरु माँ। आपसे अनुरोध रहेगा आप ऐसे ही सत्संग विहार दिल्ली में जो प्रोग्राम होता है आप उनके साथ जुड़िए और सभी को जुड़ने के लिए बोलिए। जय गुरु माँ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। On behalf of सत्संग विहार दिल्ली we request everyone, अभी श्रद्धेय महेश्वर दा मेरे को बोले, so that we request everyone to please switch on your video। हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, अगर हम लोग हमारा वीडियो ऑन करेंगे तो ये बहुत ही एक इंटरैक्टिव सेशन लगेगा, बिकॉज इट इज ए पैनल डिस्कशन एंड इंटरैक्शन सेशन, सो इट विल बी एक्सट्रीमली गुड अगर हम लोग सब वीडियो ऑन करके आपस सभी को देख सके। हाँ, जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ओके, सो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव रेस्पेक्टेड श्री बीरेश्वर रॉयदा एसपीआर, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर फ्रॉम कोलकाता। मैं दादा को अनुरोध करता हूँ, दादा आप ठाकुर जी के चरण में एक सुंदर सा कीर्तन प्रस्तुत कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। दादा श्री ठाकुरेर रचना गाइबा चेष्टा करছি। আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি হরি নাম সদা গাই রে হয় হোক মম লক্ষ জনম তাহে কোনো ক্ষতি নাই রে আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি
হরি নাম সদা গাই রে। ঘনাম্র নিন্দিত শান্ত শুনি মূর্তি যেন ভুলি না কতি, নিত্য নিত্য করে যেন চিত্ত যমুনা পুলিনে রে। বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি, হরি নাম সারা গাই রে। আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি, হরি নাম। সন্ধ্যায় আমার বন্ধা হো, তাহে নাহি কোন শোক। তর্পণ জল অর্পণ বিনা রধুক পিতৃল। ঘোষুক জগতে নিন্দা খ্যাতি, তশুক রধুক স্বজন জ্ঞাতি। আমি কিছুতেই বিমল ভাতি, ভুলিতে নারিব ভাই রে। বেদ বিধি ছাড়ি ক্ষুব্ধ পরাণ চাহে গোবিন্দে, নামামৃতে সদা ভাসিতে। ক্ষুব্ধ পরাণ চাহে গোবিন্দে, নামামৃতে সদা ভাসিতে। আহমুগ্ধ মানসে আত্ম ভুলিয়ে, হরি হরি বলে নাচিতে। হরি বল, 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 হরি বল। চাহি না কোয়ার সৌর্য বীর্য, চাহে না পরাণ বিশাল রাজ্য। ধর্ম অর্থ কাম সকলি ত্যাজ্য, মুখের মুখে দিব ছাই রে। বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি, হরি নাম সদা গাই রে। আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি, হরি নাম সদা গাই রে। জয় গুরু দাদা। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। आप एक बहुत ही भावपूर्ण जो परिवेश, जो एम्बियंस यहाँ पे सृष्टि हुआ है, बहुत सुंदर। एक्सेलेंट भजन परफॉर्म बाय रेस्पेक्टेड श्री वीरेश्वर रॉयदा, एसपीआर रिटायर्ड बैंक ऑफिसर फ्रॉम कोलकाता। मैं के चरण में विश्वेश्वर रॉयदा, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक। श्रद्धेय श्री विश्वेश्वर रॉयदा, एसपीआर रिटायर्ड बैंक ऑफिसर फ्रॉम कोलकाता। मैं ठाकुर जी के चरण में दादा के और उनके पूरे परिवार के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। We are now at the stage where this is the most attractive time of this professor, scientist and research scholars meet.
एक बार पूज्यपद दादा के पास एक गुरु भाई ने क्वेश्चन किए थे, दादा हम लोग को कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं रहता है ठाकुर जी को आइडियोलॉजी बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल those who are in IITs और IISER और in universities और institute. फॉर एग्जाम्पल मैं जो इंस्टीट्यूट में रहता हूँ वहाँ यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं और कभी कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास ज्यादा टाइम नहीं रहते, तो वो लोग बोलते हैं आप ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 मिनट के अंदर तुम्हारा ठाकुर जी का क्या आइडियोलॉजी है ये बताओ. और कभी कभी वी एनकाउंटर सम क्वेश्चंस जिसमें बहुत ही टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए. हमारे पास आधा घंटा नहीं रहते हैं, तो दिस इज द प्रैक्टिस वी शुड हैव. तो हम लोग जब पूजनीय अरविंद दादा को निवेदन किए थे, पूजनीय अरविंद दादा बोले थे ऐसा पैनल डिस्कशन के माध्यम से कभी कभी हम लोगों को ये प्रैक्टिस करना पड़ता है दैट वी शुड गिव द आंसर वेरी लॉजिकली सो दैट इट शुड बी वेरी कन्विंसिंग टू अदर. तो ऐसा पैनल डिस्कशन. तो आज का जो टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ एडहेरेंस टू द आइडियल, नेसेसिटी ऑफ एडहेरेंस टू द आइडियल, आइडियल के साथ जो अटैचमेंट, इसका प्रयोजनीयता क्या है, तो इसके ऊपर हम लोग आज पैनल डिस्कशन करेंगे. और पैनल डिस्कशन के पहले वी आर रियली फॉर्चुनेट दैट वी हैव within us we have श्रद्धेय श्री ज्योतिन्द्रनाथ मोहंतीदा, प्रतिनिधिक ऑर्गेनाइजिंग वाइस चेयरमैन ऑफ सत्संग and secretary of SATSANG VIHAR Delhi. So I request श्रद्धेय Jyotindranath Mohantida to speak a few words, say within 4 to 5 minutes, and please give a welcome note on this topic, necessity of adherence to the ideal. Shraddheya Jyotindranath Mohantida, Jai Guru. Jai Guru, thank you. My respectful pranams at the lotus feet of my Lord Sri Thakur Ankur Chandra and the Param Pujapas Sri Acharya Dev, and my heartfelt Jai Guru to all the listeners both in India and abroad. My job is the job of just a tin opener. I am here to extend my hearty welcome to the panelists, the scholars who are participating from India and abroad on this panel discussion organized by SATSANG VIHAR Delhi tonight on the subject necessity of adherence to the ideal. So far as the subject is concerned, it has many aspects. It is very difficult for me to do justice to the subject in a short span of time. And I'm sorry that due to frequent power cuts, the connectivity of the laptop was disrupted for some time. I don't know how long it will last. However, necessity of adherence to the ideal. What is ideal? According to Sri Thakur, an idea with impulses thereof, seen through the characteristic of others, which promotes the being towards perfection, may be one's ideal. In English, Sri Thakur has said so about the ideal, unquote. And in Bengali, Sri Thakur says, যাকে দেখে চলায় তোমার চলন সার্থক হয়, উল্লঙ্ঘনে এড়াতে পারো অনেক বিপর্যয়, যার কথায় আর কাজে করো অন্তর্বিন্যাস, সেই মানুষই আদর্শ যার ইষ্টতে সন্ন্যাস. It did not require me to explain these things because it is quite explicable. In Tantra, it is said, Niralamba Manakritta Nakinchit Sadhat Siddhi. No wise man can achieve anything without the support of the mind. And so far the human mind is concerned, the nature of human mind is like this, that it cannot stay independently. It always
depends upon some person, some subject, some object. It's always preoccupied with these three things mainly. Some person, a mind thinks of some person, maybe parents, maybe family members, maybe friends, maybe anybody else. And so far as subject is concerned, subject may be study, maybe exam, maybe job, maybe career, maybe anything. So far as the object is concerned, a dwelling house, like a flat, a plot, bank balance, car, etc. etc. So human mind is preoccupied all these things always. Without such thought, the mind cannot stay independently. It needs always a support. So far as the ideal is concerned, what should be the power of concentration for the mind? Who will inspire? So far as ideal is concerned, Padmasree Thakur has spoken about living ideal. Sometimes we think our books are our ideal, but one cannot spend all his life reading the books. Once you go to a library, you will simply lose yourself by seeing millions of books served in the library. Ananta Parang Kilasava Sastram, Swalpas Tathayu Bhavasta Ditna. Ananta Parang scriptures are unlimited and our lifespan is limited. One can devote all his time, all his life in studying these books only. So, books cannot be one's ideal always. It has been aptly said by Benjamin Walker in his book, Hindu World. Important truths of life do not come through the teachings of books or by independent intellectual contemplations, but are the results of innate wisdom handed down to the teachers. And gurus are the living flame of such truth who can charge the unlit wick of the disciple dipped in the oil of devotion. It need not require me to explain these things. Living ideal. From the living ideal means an ideal of flesh and blood who can inspire us by following him, by adhering to him. Our sense, our impulse, our inclination is roused. So it has been aptly said by the Nobel laureate physician of the 20th century, Dr. Alice Carroll. It is impossible to love an abstraction. One cannot enthusiastically obey the laws of rational conduct unless he considers them the commands of his personal God. We need a God who loves us, hears us, and responds to us. Such an ideal. So Sri Thakur has very aptly said that the ideal should be always flesh and blood. For example, I'm speaking here, and so many people are listening to me here, and they are everywhere. They are getting a kind of impulse. They're getting a kind of inspiration. They're getting a kind of some sensation. But my speech, if it is reported, if it is read out by someone, it will not give that kind of impulse and sensation and inspiration as it comes from the word of the person who is speaking. So, and Gurus are the living flames of truth. Swami Vivekananda has very aptly said, if a man can commit 10,000 mistakes without an ideal,
he is likely to commit 50,000 mistakes without an ideal. If a man can commit mistakes 10,000 with an ideal. So how important is the role of ideal in our life? So far as the standard of ideal is concerned, what should be the standard of ideal? This man of flesh and blood, what should be the standard of the ideal? It has been very aptly said in Mahabharata. Here they got this smart. Samishta Samata Meti Visishta Vishtata. Here they got this smart. Hinai Sah Samama. Samishta Samata Meti Visishta Vishtata. The higher and higher the ideal is, and the greater and greater the attachment to him is, the deeper and deeper is the consciousness one can achieve. So, such an ideal, who is all fulfilling, who is of our past, present, and future, who is the consummation of all the past prophets, and the fulfiller, the best, who is the embodiment of all the 33 crores of gods and goddesses, who is totally contemporary to the human life. And at the same time, whose ideals are supported by science, scriptures, and concerns each and every one in the world. Such an ideal, once Sri Thakur was asked, there are so many gurus whom we should accept. We are confused. Sri Thakur said, better you ask this question to yourself. Your mind will answer this thing. What your mind wants. The man fumbled. He cannot say anything. The Thakur says, what your mind wants? Always the mind wants to attach itself with the highest and best. And highest and best is always unique in the species of nature. We know the Everest mountain peak is the highest mountain peak in the world, one and unique. Among the continents, Asia is the biggest continent. There is no second to it. Among the oceans, Pacific is the biggest and deepest ocean in the world. Among the rivers, Amazon the biggest river in the world. They are all highest and best, which are unique. Similarly, a human mind, whenever child, whenever student, we want to score the highest mark in the class, to be topper in the university, to get a job which secures highest salary, to reach highest status. When you are ill, we want to be treated with the best of the doctors. When you dress also, we want to be dressed with the best of the dresses. When we eat, we want to eat the best of the food. And to speak humorously, when we choose our life mate, a boy wants to get married to the most beautiful girl in the world, Miss World, Miss India. The girl wants to get married to the boy who is as handsome as Prince Charles or any actor. Even in our country, in India, a man wants to die in places where he will get out, straight away go to the heaven. That is Benares, Puri, or elsewhere. So highest and best is the hankering of the mind.
And this highest and best always is personified in the personality of a man of flesh and blood, which is recognized in single word as Purushottam. Rabindranath Thakur, Purushottam is one who is the maximum evolved personality of the world, who is the maximum manifestation of human perfection in one life. He is the Purushottam. He is the ideal. So such an ideal, when you have, it is our good luck of so many births and good deeds of our parents, and very good luck of ourselves that we have been blessed with such an ideal as Purushottam, Palanmasi Thakur Chandra, in the 20th century, who fulfills all the attributes of an ideal. So I have just given hints about the subject that has been placed for discussion today by the panelists, and I hope I have just given a tin opener, just like a tin opener, and I hope the learned panelists from India and abroad will discuss this subject in greater details. I leave it with and over to Dr. Jayant Datta. Jai Guru. Joy Guru, Dada, Joy Guru. It's a really, we are blessed, respected Jyotirnath Mohantida. I can only say that we are blessed to hear from you. It's an excellent, nice introduction from respected Jyotirnath Mohantida. This is an extremely important topic which has been addressed nicely by Jyotirnath Mohantida. To discuss further, we have panelists from all over the world. We have Dr. Ranjan K. Viharada, scientist and director, Plasma Communications from Washington, D.C., USA. We have Dr. Pradyut K. Biswal, Department of Electronics and Telecommunication, IIIT Bhubaneswar. We have Dr. Sthiti Dasguptama, Assistant Professor, Law, ICFAI, University of Hyderabad, and Professor Surajit Haldar, who is also doing PhD from Agricultural Economics, Germany. And to discuss this further, I request Dr. Shoma Roy Ma, postdoctoral fellow in chemistry from Indian Association of Cultivation of Science from Kolkata, to ask a questions, and please be patient with us. We will have some question answer session. Dr. Shoma Roy Ma, over to you, please. Jai Guru. Jai Guru. Dada, am I audible? Yes, you are audible. Yeah, Okay. please, we have. I request all the panelists, because we have a time constraint, so please try to answer the questions within 4 to 5 minutes. Over to Dr. Shoma. Jai Guru. Jai Guru. Sakal ko mera Ranandita Jai Guru. I welcome all of you in the panel discussion on necessity of adherence to the ideal. The first question we have received is that we are all settled in our professional life. In spite of having all amenities, why it is important to be attached with an ideal? That is why an ideal-centric life is necessary and inevitable. मैं इसको हिंदी में ट्राई करती हूँ कि हम सभी लोग प्रोफेशनली सेटल्ड है, एजुकेटेड भी है, हम लोग का जीवन में इतना सारा सुविधा है, बट देन आदर्श के साथ जुड़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर आलोकपात करेंगे रंजनदा. Ranjanda, the stage is all yours. Jai Guru. Ranjanda, are you there? Can you please unmute?
I think he is not there. Okay. He's there. Yeah. Yeah. Jai Guru everybody. थोड़ा मुझे अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा था. I think it was required for the administrator to allow me. So सबको मेरा राह एवं आंतरिक जय गुरु और दोल उत्सव के पावन अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूं और ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना रखता हूं. उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सपरिवार सपरिवेश सुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे. कल जैन दा ने मुझे कॉल करके बताया, इंडिया के टाइम रात के काफी 12 बज चुके थे पैनल में डिस्कशन करने के लिए, तो मैं उनको मना नहीं कर पाया. मेरा इतना ज्ञान और अभिज्ञता भी नहीं है कि मैं ठाकुर जी के प्रदत्त किसी भी फिलोसॉफी के बारे में किसी भी भाव से किसी प्रकार की आलोचना रख सकूं. लेकिन हाँ, मैं अपना जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसी से कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. और एक बात भी है, यहाँ जतिंदा भी है हमारे साथ, जतिंद्र नाथ महंती. मैं उनको बचपन से जानता हूं और उनके ज्ञान और ठाकुर जी के प्रति उनके डेडिकेशन से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं. वो मुझे पता नहीं जानते नहीं होंगे, लेकिन एक बार तो जरूर मैं बताना चाहता हूं इधर कि मैं उनको कॉलेज डेज में जानता था, लाइक 15-20 साल पहले. और मेरा तब बाल काला था, अभी तो सफेद हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं जैसे देख रहा हूँ वो वैसे की वैसे ही है. तो दैट्स प्रीटी इंस्पायरिंग और मैं उनको अपना जय गुरु बताता हूँ और एक बार. तो आज का जो प्रश्न है, आदर्श केंद्रिक जीवन क्यों प्रयोजन और अपरिहार्य है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है. इसको समझने के लिए लाइफ का जो मेजर डिनोमिनेशंस है उनको समझना काफी जरूरीमंद मैं अनुभव करता हूं. और एक बात है कि मैं इसका जो आंसर है 3 मेजर डिनोमिनेशंस में बताऊंगा, जो कि आपको पता चलेगा और एट द एंड में समराइज कर दूंगा आपके लिए. गीता में एक जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. इसका मतलब है बहुत जन्मों के उपरांत जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मुझे जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, मेरे प्रदत्त मार्ग पर चलने की कोशिश कर सकते हैं. एग्जैक्टली द सेम थिंग ठाकुर जी ने बताया, व्हाटएवर आई हैव सेड इज फॉर इंटेलेक्चुअल्स ओनली. आमी जा बोलेছি মাথাওয়ালার কাম. What does it mean? So there are a lot of things Thakur has explained in his lifetime through literature, through verses, through dictations. So जो मैं आज 3 चीजों समराइज करने वाला हूं वो एक है कि हम जब संसार में रहते हैं तो 2-3 नजरिया को देखना जरूरी है. एक है कि हम नेचर के साथ कंप्लाई करके कैसे चल सके. सो माय फर्स्ट पॉइंट इज टू आंसर दिस क्वेश्चन, कंप्लाई विद द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ द नेचर एंड इट्स फेनोमेना. तो नेचर तो एक बहुत बड़ा चीज होता है और बहुत सारा चीज हम उसके हमारे समझ के बाहर भी रहता है. जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. एक फूल कैसे खिलेगा, देयर इज नो स्पेसिफिक डिक्टेशंस, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स. बर्ड कैसे उड़ेगा आकाश में, हमको कैसे प्यास लगेगा, ये तो छोटी छोटी एग्जांपल है जिसका नेचुरल फेनोमेना से ऑकरेंस होता है. ऐसे जितने भी हमारे ठाकुर जी के बनाए हुए इस सचराचर विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे क्रीचर्स है, जितने सारे नेचुरल फेनोमेना है, जितना आप जो भी बायोलॉजी से ले लो, फिजिक्स से ले लो, केमिस्ट्री, ये तो हम कंप्रहेंड करने के लिए छोटा छोटा जरिया ढूंढते रहते हैं. लेकिन देयर आर मिलियंस एंड इनफाइनाइट फेनोमेना जो अकरेंस होता है नेचर में टू सपोर्ट आवर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. तो एक चीज को, जबकि हमारा 99% इग्नोरेंस में हम रहते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस कि इतने सारे चीज को इतना सारा चीज को कंप्रहेंड करके, एसिमिलेट करके, इंटरप्रेट करके अपने जीवन में उतारना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो जब हमको कुछ भी पता नहीं है और थोड़ा बहुत ज्ञान है, उससे कैसे जीवन निर्वाह कर सकते इन कंप्लायंस टू द मिलियंस ऑफ फेनोमेना ऑकरिंग इन द नेचर, तब हमको एक रेफरेंस फ्रेम जरूरत होता है.
और जैसे अभी जतिन दा बता रहे थे अति सुंदर भाव से, थ्रू ए आइडियल ऑल दिस नेचुरल फेनोमेना का ऑप्टिमल मैनिफेस्टेशंस होता है। तो जब उनके पास आते हैं वो छोटे छोटे चीज हमको बताते हैं जो हम कर सकते हैं, तो उसी करने के अंदर में वो सारा नेचुरल फेनोमेना मैनिफेस्टेशन होता है और हम काफी कंप्लाइंट रहते हैं नेचुरल ऑकरेंसेस एंड फेनोमेना के तरफ, और अपना जीवन को सहज और सुंदर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा यही है कि जब हम लाइफ में जीते हैं तो एज सोशल बीइंग ह्यूमन हम लोगों को पंच महाजीवन के अंदर जाना पड़ता है। व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन। हम किसी ना किसी भाव से किसी रूप से जड़ित होते रहते हैं। तो इसका शुरुआत जो होता है वो व्यक्ति जीवन से शुरुआत होता है। एज एन इंडिविजुअल आई इंटरेक्ट विथ ऑल एवरीथिंग, क्योंकि मेरे जो व्यक्ति जीवन है उसी व्यक्ति जीवन से एक बृहत्तर समष्टिगत जीवन शुरुआत होता है। तो अगर व्यक्तिगत जीवन को फर्दर डाइसेक्ट करेंगे तो बाय मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ लिविंग, एक पर्सनल लाइफ होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ होता है। प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही छोटा होता है क्योंकि दैट ओनली हेल्प्स अस फॉर सर्वाइवल। जीवन का कुछ साधन जुगाड़ करने में वो हमको मदद करता है, कुछ पैसे हो या कुछ पद हो, कुछ प्रतिष्ठा हो, ये सब। लेकिन लाइफ इज मच बिगर एंड मच मोर मीनिंगफुल देन जस्ट बीइंग सर्वाइवल। हमको अगर बताया जाए कि तुम्हारा सर्वाइवल हम सिक्योर कर देंगे, विल यू बी हैप्पी? नो, वी ऑलवेज वांट मोर एंड मोर। सो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब ठाकुर जी के पास आते हैं तो जीवन का जितने सारे बियॉन्ड द प्रोफेशनल लाइफ, सेटलमेंट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ या पारिवारिक लाइफ, वो जो पंचमहाजीवन का ऑप्टिमल मैनिफेस्टेशन के लिए हमको ये होता है, एक जरिया मिलता है। तो मैं यही बताता हूं, ठाकुर जी, ये तो वेरी वास्ट चीज है, जो लाइफ का जो 3 मेजर पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स है, शिक्षा, दीक्षा, विवाह जो है। देखिए, अगर हम एक एक चीज को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देंगे तो जीवन कितना सुकून हो जाता है। एक फॉर्मल एजुकेशन की बात लीजिए, कोई 1 2 4 अक्षर पढ़ लेता है तो अच्छा जॉब मिल जाता है, उसको कुछ पैसा मिल जाता है, वो आनंद में रहता है। किसका शादी अगर होता है अच्छी परिवार में, अच्छी घर में, तो वो तो बहुत ही और सुकून है। इष्ट गुरु जो आइडियल सेंट्रिक लाइफ होता है, थ्रू इनिशिएशन जो हमको मिलता है, वो अगर मिल जाए तो और क्या। तो ठाकुर जी ने बताया जीवन को सहज, सरल, सुंदर करने से इस तीनों मेजर चेक पॉइंट को ऑप्टिमाइज करना ही है। मैं काफी लोग देखा हूं जो पढ़े लिखे काफी है, बड़े जॉब है, लेकिन उनका फैमिली लाइफ डिस्टॉर्टेड है, उनका हेल्थ डिस्टॉर्टेड है बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स। तो ये जो 3 मेजर चेक पॉइंट्स है, these must to be optimized to the fullest extent to have the beauty and the purpose in life. ये मेरा सेकंड पॉइंट है, इसलिए आइडियल सेंट्रिक लाइफ है। और थर्ड चीज है फाइन ट्यूनिंग द बैलेंस बिटवीन द डेप्थ एंड वाइड्थ इन लाइफ। ये मेरा तीसरा पॉइंट है, जिसके लिए हमको आइडियल सेंट्रिक लाइफ जरूरत है। मैं और 1 मिनट लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं जब बताता हूं वाइड्थ ऑफ लाइफ और ब्रेड्थ ऑफ लाइफ मतलब क्या है। मैं व्यक्तिगत जीवन से आरंभ करता हूं, दाम्पत्य जीवन में, पंच महाजीवन में एक्सपेंड कर गया, मैं अपनी एसेट्स बढ़ाया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाया, मेरे समाज में पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ाया, तो मैं सोसाइटी में एक्सपेंड कर गया। ये जो बिस्तर जाना, विराट हो जाना, एक से अनेक हो जाना, ये जो वाइड्थ है, ये एक एस्पेक्ट है। और दूसरी क्या है, जो डेप्थ ऑफ लाइफ। डेप्थ ऑफ लाइफ में क्या है, अगर इतनी भी मैं एक्सपेंड कर जाऊं तो भी मैं अपने जीता हूं तो अपने अंदर ही मेरा थॉट्स, इमोशंस, इंप्रेशंस, मेमोरीज जो जितने सारे हैं मैं अपने ही अंदर जीता हूं। तो देखा जाए तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हिमालय के एक साधु ने जो दुनिया का सारे स्प्रेड को खत्म करके एक गुफा में बैठा है, अपने सोच, अपने डेप्थ, गहरा, जीवन के गहरे में इतना चला गया है, he doesn't need feel the necessity to expand in its life। वो भी फुलफिलमेंट है। कोई लोग, हम सांसारिक आदमी तो इतना बिस्तर जाते हैं, नेम, फेम, जस्ट, जितने भी अर्थ, मान, यस, इतने इसमें, तो हम ब्रेड को भी, डेप्थ को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ठाकुर को हमको क्यों चाहिए? बिकॉज he fine tunes to make a meaningful balance between the depth and width in life। हमको जीवन में प्रसार भी चाहिए और जीवन में गहराइयां भी चाहिए, ताकि हम संसार में खेलें और अपने अंदर में भी सुकून से रह सके। तो these are my 3 points जो हमको काफी समझने का जरूरत है। और
थैंक यू सो मच। आप सबके लिए मेरा प्रार्थना रहेगा ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु माँ। रंजन दा ने बहुत सुंदर से ये क्वेश्चन के ऊपर आलोकपात किए हैं। नाउ आई वांट टू कॉल स्थिति माँ टू फर्दर शेड लाइट ऑन दिस। जय गुरु माँ। जय गुरु। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया गया है और मेरे पहले रंजन दा ने आई थिंक ही कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जिसे इस विषय पे बोलना चाहिए, तो मेरे पास कुछ बचता नहीं है। और सबसे पहली बात है जो जतिन दा ने जो शुरुआत की है, दैट वाज इन इटसेल्फ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो यहाँ बहुत सवाल तो लगता है बहुत आसान है, बट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो अगर हम लाइफ में थोड़ा अपने जो चौहद्दी है, जो अपनी बाउंड्री को थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो हमें पता चलता है। जैसे अपने चाइल्डहुड से आगे निकलते हैं या फिर अपने जीवन में आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमारे काउंटर होता है किसी भी तरह, हम स्कूल जाते हैं, आगे कॉलेज जाते हैं, या फिर आज जब यहाँ पे सवाल में एक शब्द लिखा है प्रोफेशनल लाइफ में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जैसे इन्होंने कहा कि हम विस्तृत हो रहे हैं, हम अपना विस्तार कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू जस्ट एक्सपैंड आवर विंग्स, अपने विंग्स एक्सपैंड करके हर एक एक्सपीरियंस को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एजुकेशन के माध्यम से, कोई बिजनेस के माध्यम से, गृहस्थ आश्रम में भी सब अपना एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये होता है कि जब हम एक एक स्टेज ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम जब वर्ल्ड को फेस करते, दुनिया को फेस करते हैं, एक एक स्टेप पे हमें रियलाइज होता है जीवन में आदर्श की क्या जरूरत है। आदर्श को मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूंगी क्योंकि जतिंदर ने बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन कर दिया है। ठाकुर की बात को उन्होंने कोट अनकोट कहा है, आदर्श जो हमें ऑल फुलफिल कर सके, इन ऑल वे हमें फुलफिल कर सके, हमें सब तरह से हमारे वैशिष्ट अनुयायी हमें कंप्लीट कर सके। तो पॉइंट ये होता है हमारे वैशिष्ट को हमसे नहीं छीना गया। मैं स्थिति जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी, मेरे गुणों को छीना नहीं गया। मैं जैसी हूं उसमें मैं कैसे अच्छा इंसान बन सकती हूँ, जैसे मेरे पहले रंजन दा ने बोला बिंग मिस्टर रंजन वो कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, बात ये होती है। अब किसी आदर्श से मैं वैसे ही जुड़ना चाहूंगी जो मुझे मेरे अस्तित्व को रखते हुए मुझे कंप्लीट करे, मेरे एग्जिस्टेंस को रखते हुए। इसका पेडिस्टल एक रहेगा, जो मेरा इंस्टिंक्ट है, जो मैं हूं, उस पे बेस करके मुझे बनाएंगे। वो एक आदर्श की जरूरत हमें होती है, हु इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ। और हमने यहाँ जो हम लोग यहाँ जुड़े हैं, हम सब ने ऐसे ही पुरुषोत्तम को अपने जीवन में लिया है, whom we call पुरुषोत्तम, जो सब में बेस्ट है, ही इज द सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम है, इसलिए हम पुरुषोत्तम कहते हैं ठाकुर को। क्योंकि हम कह रहे हैं अनटिल एंड अनलेस ठाकुर के बारे में कोई जानता है, ठाकुर के बारे में कोई पढ़ता है, उनके साथ एक्सपीरियंस करता है, तब तक उनको रियलाइज नहीं होगा हम क्यों ये शब्द बोलते हैं। ये बोलने वाली बात लगती है, बट मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे तो लगता है मैं हर एक पल मुझे महसूस होता है कोई भी मटेरियल एमिनिटीज हमें कंप्लीट नहीं कर सकती, कोई भी एजुकेशन, सो कॉल्ड डिग्री वाला एजुकेशन, वी आर जस्ट लिटरेट, वी आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल। वर्ल्ड में हम एजुकेशन कहीं नहीं देखते, किसी के पास नहीं है, सब लिटरेट्स है। कोई कितना बड़ा पीएचडी हो, कितना पोस्टडॉक हो, क्या हो, मैं इस बात को बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ कि कोई एजुकेटेड है। एजुकेटेड इंसान तभी हो सकता है जब वो पुरुषोत्तम से जुड़ता है, उनके संस्कार में संस्कृत होता है, तभी कोई एजुकेटेड हो सकता है, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी कल्चर, एनी संस्कार जो भी हो सकता है वो उन्हीं में है। और उनके संस्कार में जिसने अपने आप को रंगा लिया वो ही सिर्फ संस्कृत, आई थिंक टोटली कल्चरली एनरिच्ड है। और बाकी सारी कितनी भी एमिनिटीज किसी के पास आ जाए वो नहीं हो सकता है कंप्लीट। लोगों को आज बात करने की तमीज नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होता है घर संसार कैसे करना है, बच्चों में क्या मैनिफेस्ट करना है, पॉलिटिकल बड़ी बड़ी डिस्कोर्सेस की बात करते हैं, बड़े बड़े देश बदलने की बात करते हैं। आज देख रहे हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, ऐसे रिवोल्यूशनाइज कर देंगे, वैसे कर देंगे, पैसों से कर देंगे। किसी चीज से रिवोल्यूशनाइज नहीं हो सकता अगर इंसान इंटरनली रिवोल्यूशनाइज ना हो। जैसे दादा ने कहा, रंजन दा ने कहा, इंटरनली एक्सपैंड होना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नली हम कितनी भी कोशिश कर ले, इंटरनली नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता हम एक्सटर्नली हो सकते। इंटरनली होने के लिए एक ही प्रोसेस है,
एक ही प्रोसेस है, वो है पुरुषोत्तम, और वो भी जो युग उपयोगी आए हुए हैं। अब मैं इस समय कल ही में बैठ के मैं द्वापर में श्री कृष्ण आए थे उनको पकड़ के मैं चलूंगी तो मैं आई थिंक मे बी श्रीमद् भगवत गीता विच इज आई कंसिडर वन ऑफ द हॉलीएस्ट बुक्स, उनको पढ़ के मैं इडियट बन सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना इसका मैनिफेस्टेशन मैं निकालूंगी ना अपने हिसाब से, मुझे जो समझ में आएगा उसको मैं इंटरप्रेट करूंगी। लेकिन जब पुरुषोत्तम को मैं पकड़ूंगी मुझे समझ में आएगा एक्चुअली गीता क्या है, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ गीता। तो यही चीज होगा, जो पुरुषोत्तम युग उपयोगी जो आते हैं उनको मुझे पकड़ना है, उनकी दीक्षा में दीक्षित होना है, उनके स्कूल में स्कूल्ड होना है और उनके बताए पथ पर चलना है, इसके सिवाय कोई सेकेंडरी पथ नहीं है। He is the only one and nobody else is important. If I love him, I can love everybody, and if I love everyone and he is just secondary to me, I can't be anything. यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, कोई मेटीरियलिज्म कुछ काम नहीं आएगा, यही मैं समझती हूँ। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु माँ, आप बहुत सुंदर से और बहुत भाव से ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो नाउ वी वांट टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव received. The question is, in spite of being aware of this indispensable of ideal-centric life, why most of the people, especially young generation, are reluctant to have an ideal in their life? Actually ये क्वेश्चन मेरे लिए तो बहुत ही रिलेवेंट है। इट्स बिकॉज यंग जनरेशन के लिए आइडियल को एक्सेप्ट करने का क्यों रिलक्टेंसी है, इसके ऊपर पहले आलोकपात करेंगे। प्रद्युद्दा, आर यू देयर? या जय गुरु माँ। जय गुरु। सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज की पावन उत्सव में, आज की जो दोल पूर्णिमा है, उसी अवसर में मैं सबका मंगल श्री श्री ठाकुर के चरण में प्रार्थना करता हूँ। मुझे जो टॉपिक दिया गया है कि हम लोग तो अभी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि व्हाई आइडियल इज नेसेसरी इन आवर लाइफ। और मेरा ये जो क्वेश्चन था, मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यंगर जनरेशन जो जानता है कि आइडियल सेंट्रिक लाइफ चाहिए जीवन में, फिर भी व्हाई दे आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट वन आइडियल इन देयर लाइफ। अगर हम यंग जनरेशन को देखेंगे, जो भी हमारे टाइम पे भी हम जब बहुत यंग थे, या कोई भी स्टूडेंट को देखेंगे अपने लाइफ में, तो उनके मन में हमेशा ये क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रहता है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछने का, व्हाई एवरीथिंग दे आस्क व्हाई। इफ यू विल टेल देम टू ओबे समथिंग, दे विल आस्क व्हाई, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओबेइंग। सो अगर हम उनको बोलते हैं कि हमारे जीवन में आदर्श चाहिए, तो उनके मन में पहले ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों मुझे चाहिए श्री ठाकुर, क्या बेनिफिट होगा मुझे इसमें। तो इसीलिए उनके मन में हमेशा एक रिबेलियन माइंड रहता है, क्वेश्चनिंग माइंड रहता है। तो उसको एड्रेस करने के लिए श्री ठाकुर को भी एक बार पूछा गया था कि यंग जनरेशन जो है, जो स्टूडेंट है, उनके अंदर आइडियल क्यों नहीं है, आइडियल इन्फ्यूज क्यों नहीं है। श्री ठाकुर उस समय बोले थे कि उनके अंदर जो स्टूडेंट है या जो यंग जनरेशन है, उनके अंदर आइडियल इन्फ्यूज नहीं है, क्योंकि जो शिक्षक है, जो गुरु है, वो आइडियल लाइकिंग नहीं है। तो इसीलिए अगर जीवन में अगर यंग जनरेशन को देखेंगे, श्री ठाकुर बोले थे कि बी कंसेंट्रिक, तो उनको आइडियल सेंट्रिक करने के लिए और उनको बी कंसेंट्रिक करने के लिए आइडियल की तरफ हमें दो बातें ध्यान देना पड़ेगा। एक बात है कि अगर उनके लाइफ में अगर कोई भी स्टूडेंट्स रहता है या कोई भी यंग जनरेशन रहता है, तो उनके लाइफ में अगर देखेंगे तो थ्री डायमेंशन रहता है। एक है उनके पेरेंट्स, और एक है उनके गुरु शिक्षक, और एक है द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी है घर में जो पेरेंट्स है या स्कूल या कॉलेजेस में जो टीचर है, उनके ऊपर ये दायित्व रहता है कि कैसे ये यंग जनरेशन को आइडियल सेंट्रिक करना पड़ेगा। क्योंकि उनके मन में, वही मैं जो बोला कि उनके मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो उनके जो क्वेश्चन, जैसे श्री ठाकुर बोलते हैं
कि धर्म को जानना ही विषय के मूल कारण को जानना और वही ज्ञान है। तो अगर वो चाहते हैं कुछ जानना तो वो ज्ञान है, और वो भी one aspect of the dharma also. So we have to take care of that part. So one thing comes to the mind first, the guru, teacher. As Sri Thakur has told, the teacher should be the ideal centric life. So Sri Thakur has said at one point that first and foremost duty of a teacher is to put the ideal before the students gloriously, lucidly, and affectionately. So जो भी आइडियल है उनके बातों को, जो भी स्टूडेंट है या जो भी यंग माइंड है उनके सामने ग्लोरीफाइड करके बताना है, उनको स्पष्ट रूप से बताना है कि आइडियल क्या है, क्यों हमको आइडियल एक्सेप्ट करना है, और उनको स्नेह से, श्रद्धा से, प्यार से उनको समझाना है कि क्यों हमको श्री ठाकुर को और कोई आइडियल को हमें लाइफ में एक्सेप्ट करना है। और घर में अगर देखते हैं तो पेरेंट्स को भी वही बात अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम जो लाइफ अपना, जो भी पेरेंट्स है, जो भी पिता माता है, वो जो भी गुरुजन है घर में, सब जैसे आइडियल सेंट्रिक हो, तब भी जाके उनके मन में जो क्वेश्चन है तो वो हट सकता है। श्री ठाकुर का एक वाणी है, गुरु किंबा गुरुजने आग्रहातुर सेवा फले अनटनटी जाबे छूटे चलत स्नायुर पुष्टि बढ़े। जो भी गुरु हम जो गुरु बोलते हैं, हमारा जो श्री ठाकुर जो सुप्रीम बिलव्ड है, सुपीरियर बिलव्ड हम नहीं बोल सकते, उनको सुप्रीम बिलव्ड बोल सकते हैं। और हमारा जो गुरुजन है उनके प्रति अगर हम सेवा की आग्रह रहेगा और उनको प्यार करने की, उनको क्या लव हमारा मन में रहेगा, स्टूडेंट्स के मन में, तब जाके वो उनके लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं और उनके लाइफ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ये मेरा पॉइंट है। जय गुरु। जय गुरु दादा, आप बहुत सुंदर से ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं। नाउ इसके ऊपर फर्दर आलोकपात करने के लिए मैं सुरजीत दा को आमंत्रण करती हूँ। जय गुरु दादा, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। I think he's having some problem. Yeah. Actually, yeah. Jai Guru to everyone, and I express maybe, is it okay if I speak in Hindi or English? Whichever you feel comfortable, maybe the group is okay with Hindi and English, right? Okay. Thank you. So tell in English. Okay. Today is the day, and we celebrate with the colors. Internationally, it is known that India is having such a diversity, and it is like color as well. We find in our life, and today and also tomorrow we'll be celebrating with color. It is actually has been made a culture in India that whenever we have a transition period, to say Sankranti, and we make our life in such a way that we get adapted to it. And now, because one entire season is getting completed and we are moving towards another new season, color is actually one thing that certainly brings in our all existence one new adaptation capacity. Sri Thakurji, our love Lord, he narrated in one of his lifetime saying in Bengali, Shikhoke nai ishtotan ke jagabe chhatro pran. If a teacher has no ideal-centric life, how one can show to a student that how one can become or one can have a enlivening thought. This is one, I mean, my English way of translation. Pardon me for any mistakes. Till now, we discussed that why we need ideal, and then it's because we are talking about youth, and mostly I find youth in my college because
I still count myself in the category of youth. And I find bachelor students, those who are doing BSc Agriculture in my college and BSc Horticulture. You might be listening, a background music is coming because it is near to the hostel and they are celebrating the festival of color the way they want it most. Now, I was just questioning myself why it has to be this way. And the answer is just now, our previous speaker, Mr. Pradut Kumar Biswal, he has rightly pointed, whatever we experience through two things. One, from our parents, that is encoded in gene, and the second, the environment, the upbringing. If this is not ideal centric, is very big caution that Thakurji has also made. If this is not ideal centric, then no one can stop us to lead to a chaotic life. There's a big caution in this era when our mind fail to find one to whom we should ask all our question, then it is Thakur, Purushottam. He sent his all messengers, he sent his Ritiks, he sent his Panjadhari Dada, and those among who us we are discussing about him and his way of life. That if today young generation, they are reluctant because they do not find that indispensable is something that should have a never-ending source of life. Because now the music that you're listening, it will end sometime. But the holy name that we are chanting every time, it creates a layer of energy inside us, and it never stops. It never stops, and it will. And Thakurji said that it will never let you to stop. And that is the reason, if we imbibe his way of life in our life, he has shown how a human should behave. To become a human, to become a human of the Creator, our loved Lord, then only I think, without opening mouth, without saying a word, our juniors, seniors, those we can still consider as youth, they will certainly follow the Supreme Father, the person who actually showed what should be a person, like a human being. I rest here now. Thank you. Jai Guru Dada. Jai Guru. So after this answer, I think we got the information how to convince the young generation. Now to further proceed, I have the question: why is it necessary to take initiation from present prophet Sri Sri Thakur Onukul Chandra? आसपास में इतना सारा गुरुज है, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से दीक्षा लेने का जरूरत क्या है? इसके लिए मैं रंजन दा को फिर से बुलाना चाहती हूँ. जय गुरु दादा. Jai Guru Ma. So why we need to get initiated from Sri Thakur Anukul Chandra? So this is a fantastic question actually, partly because अगर हम जीवन को समझना चाहते हैं तो टाइम का जो रेलिवेंस है उसको हम समझना बहुत ही जरूरी है. क्यों? Because changes are the nature of life, जो कि concurrent with the progress of time. टाइम की जो टाइम का जो फ्लो है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो डिस्टिंक्शंस है, दोस्त उसी के हिसाब से
हमारे जो जीवन का जो उपकरण है, जीवन का जितने साधन है वो बदलते रहते हैं, हमारे नजरिया बदलता रहता है, हमारा तरीका बदलते रहता है, और उसी हिसाब से वी गेट यूज्ड टू द अपडेटेड वर्जन ऑफ द लाइफ। तो उसी के लिए फॉर दैट रीजन, if we want to get initiated, we want the most updated form of consciousness in a personality where it's manifested. तो जब हम दीक्षा की इनिशिएशन की बात करते हैं तो हमारे मन में स्वतः प्रश्न आता है कि इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड एक्चुअली क्यों जरूरत है, अगर जरूरत भी है तो कैसे, क्यों, ठाकुर जी से क्यों। तो इसके लिए हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनिशिएशन क्या है। इनिशिएशन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखा जाए तो टू इनिशिएटेड, टू गेट स्टार्टेड, टू इनिशिएट विथ व्हाट, टू गेट इनिशिएटेड विथ लाइफ। तो हम तो पैदा होते हैं और हमारा जीवन शुरू होता है। नो, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। हम पैदा होते हैं, जीवन ऐसे ही अपने आप खिलने लगता है, लेकिन जीवन का जो उपकरण है, जीवन का जो एलिमेंट्स है, जो एट्रीब्यूट्स है, उसको फाइन ट्यून करके अपने अंदर इंटीग्रेट करने के लिए हमको एक प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है, जो कि करंट और लिविंग आइडियल में इवॉल्व होके होता है। और एक दूसरे हिसाब से देखा जाए तो जो इनिशिएशन है, इट कम्स फ्रॉम द, जिसका लिटरल मीनिंग होता है दीक्षा, जो कि दीक्ष रूट से आता है संस्कृत, जिसका मतलब है सामर्थ्य, एफिशिएंसी, दक्षता। तो इनिशिएशन इज नथिंग बट ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल टू बी मोर एफिशिएंट इन लाइफ। मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, उससे बेहतर मैं बन सकूंगा by practicing those tenets of life, the principles of life, basically. So now coming to why Sisi Thakur Anukul Chandra. So जतिन दा ने और हमारे जितने स्पीकर, स्थितिमा और सुरजिता, ये सारे लोगों ने from different sides of things उन्होंने बता दिया है कि क्यों सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो हम we are created not equally, we are different, we have different mindsets, लेकिन हम जिस माइंडसेट में भी ठाकुर जी के पास आते हैं उसका एक फुलफिलमेंट हम अपने आप देख सकते हैं, उसका एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ देख सकते हैं। ठाकुर जी के लाइफ टाइम में काफी लोग, विभिन्न अर्थ, यज्ञ, सुरर्थार्थी, कितने लोग आए, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट बैंड्स ऑफ माइंड आए। ठाकुर जी सबको फुलफिल करके एक कंटेम्पररी रेलिवेंट मीनिंगफुल सॉल्यूशंस देके उनको फुलफिल करके गए। मैं अपनी बात देखूं, अपने अंदर देखूं, तो मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, अच्छा बुरा जो भी हूं, उसका द बेस्ट पर्सन मैं हूं बिकॉज ऑफ सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र। और ये मैं अपने अंदर नहीं, काफी सारे लोगों के जो मेरे पास चारों तरफ है, जिन्होंने ठाकुर जी को जाना है, माना है, वो लोगों ने कंटेम्पररी नॉलेज को ट्रांसलेट करके कैसे बेस्ट आउट ऑफ इट निकाल सके, वो नजरिया उन्होंने देख पाए हैं। ठाकुर जी को पकड़े हैं, सीसी ठाकुर जी अनुकूल चंद्र जी को, तो हमको सुख, शांति, आनंद में रहने का अधिकार है, because he knows the absolute protocol to live a more meaningful and dedicated life. ये एक बात है। तो we want to be relevant and we want the best and brightest, so that's why we need to get initiated with सीसी ठाकुर। और कंटेम्पररी वर्ल्ड में दैट्स काफी रेलिवेंट रहता है, क्योंकि वी डू नॉट हैव टू गो टू दैट रिचुअलिस्टिक प्रोसीजर्स। जैसे कि मेरा छोटा बेटा है, तो एक बार उससे बात हो रहा था, तो मैं बोला कि व्हाई किड्स आर सो हैप्पी, बच्चे क्यों खुश रहते हैं? तो वो बोला कि बिकॉज एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो हम जब संसार में बड़े होते हैं, पहले तो हमको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, फिर फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है, फिर फैमिली का सपोर्ट मिलता है, सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा टाइम आता है जब ये सारे सपोर्ट्स मीनिंगलेस हो जाता है। आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं, यू कैन पिक्चराइज इट वेरी वेल, बेटर देन मी, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन को अपने ज्ञाति कुटुंब सबके सामने युद्ध करना पड़ा। तो उसको तो दिमाग पूरा इट स्टॉप्ड वर्किंग। तो उसी सिचुएशन को, उतना क्रिटिकल सिचुएशन का हाउ he could deal and led his life because he was guided by पुरुषोत्तम श्री कृष्ण।
तो एज ए पर्सन हम लोग सारे डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट इंटरसेक्शंस ऑफ लाइफ में, डिफरेंट कंफ्यूजन्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट चैलेंजेस में तो उलझे रहते हैं, जहां की हमको ये जो सो कॉल्ड सपोर्ट सिस्टम ओब्लिवियन हो जाता है. इट सीम्स लाइक इट्स नॉन एग्जिस्टेंट. तो हम क्या करते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं, तो वी गेट मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस, बिकॉज आपसे अच्छा आप खुद को और कोई नहीं जानते हैं, और अगर कोई जानता है वो तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी होते हैं. तो वो बराबर आते हैं और उसी सिचुएशन में आपको पुट करके और उसी सिचुएशन से आपको निकाल के एक अमृतमय जीवन करने का एक नजरिया देते हैं. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके मेरा वक्तव्य खत्म करूंगा. तो दिस इज वेरी रिसेंट एक्सपीरियंस एक्चुअली. 3 साल पहले मैं वॉशिंगटन डीसी में जब था, मेरे परिवार के साथ हम लोग सेटल हो गए थे, ऑलमोस्ट घर खरीद के ऐसे हम सेटल हो गए थे. तो अचानक मेरा क्या हुआ, मेरा जॉब का ट्रांसफर हो गया 2019 में. तो और बाय द टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी, और एक बच्चा होने वाला था. तो मैं सोचा कि अरे ये तो अभी तो सही जा रहा था, फिर मेरा जॉब का क्यों ट्रांसफर हो गया. और ये टेम्पररी डेपुटेशन से 2 years टू मिड वेस्ट, जो कि काफी दूर है, और वाइफ भी प्रेग्नेंट है और दूसरा बच्चा भी है, तो इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग. तो मैं क्या करूंगा, लेकिन ठीक है, ठाकुर जी का जो मर्जी है हम जाएंगे. तो मैं 2019 सितंबर में मिडवेस्ट चला गया विथ फैमिली, और वहां जाके मेरा काम में ज्वाइन किया. और देखिए उसी टाइम में कोविड आ गया एंड एवरीथिंग बिकेम रिमोट. तो वॉशिंगटन डीसी में होता तो इट मस्ट हैव बीन ए वेरी केओटिक सिचुएशन, बिकॉज छोटा बच्चा को मैनेज करना, फिर फैमिली को देखना. और तो ठाकुर सेंड अस टू ए सिक्लूडेड प्लेस, वी गॉट ऑल द सपोर्ट. हम वहां जाके एक नैनी हायर कर पाए, जो कि यहाँ बहुत डिफिकल्ट है. वॉशिंगटन डीसी एक में तो मिलता नहीं और बहुत ही महंगा रहता है, लेकिन उस एरिया में हम एक फुल टाइम नानी हायर कर पाए, दोनों का जॉब भी सिक्योर कर पाए, और उसी टाइम में बच्चों का भी देखभाल हो गया. 2 साल बाद मैं फिर वापस इधर वॉशिंगटन डीसी आ गए. तो हमको पता नहीं होता है कि ये तो एक सांसारिक एग्जांपल में दे रहा हूं, ये तो मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स है, हम सबका है. ये तो मैं आज आपके साथ शेयर करने का मौका मिला है तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये तो छोटे से छोटे एग्जांपल्स है. तो दैट्स व्हाई ही नोस अस, ही अंडरस्टैंड्स अस बेस्ट एंड लव्स अस द मोस्ट. दैट्स व्हाई श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, बिकॉज ही इज द मोस्ट इवल पर्सनालिटी ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड. एंड मैं तो हमेशा बताता हूं कि अगर दुनिया वर्ल्ड अगर किसी एक को जानना बहुत जरूरी है तो वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही है और कोई नहीं है. जय गुरु. Jai Guru Dada. Yeah, I also believe that everything is taken care of. एंड इसके ऊपर फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं सूरजीत दा को स्टेज में बुलाना चाहती हूँ. जय गुरुदा. Jai Guru. I would like to cite 2 verses from Satyanusaran, and then it will follow by a small incident. In Satyanusaran, Thakur is writing, and it is English translated. He is writing that he within whom all the resources of the world knowledge, love, and activity are spontaneous and by the आप influence अगर फ्रेम वाला लेंगे ना, ये जो ऊपर राधा कृष्ण का है, and all the diversities of the world find a final solution is the God of many. And in Hindi we know Bhagwan. The definition of Bhagwan, Thakurji, he gave it to us. Second definition, he whose intense and active inclination for a living ideal, transcending time and space, has made him God normally, whose literature, philosophy, and science, penetrating the scattered good and evil prejudices of the mind, have been meaningfully adjusted in the ideal, is the true master. And in Hindi or Sanskrit, we know him as Sadguru. Now, the incident. It was time when Sri Ramakrishna Dev was coming from the bank of Ganga after taking his usual bath, and a few scholars
The then scholar, they are the batchmates, you can say batchmates of to whom we know now as Swami Vivekananda, but then Narendranath Datta. They wanted to know or test the knowledge and everything of Paramhamsa Sri Thakur Ramakrishna Dev. Now they approached and asked him, well, and their tone is like that. Well, we know that you have been telling others that you have seen Bhagwan, God of men. Can you show us now? And without any delay, he narrated, well, I have a question. It is a very pressing question to me. I don't know, you are scholars, can you please help me? And it was like a boomerang to them. But the patient said, well, yes, we can answer you. Well, I have seen that many people are there saying that you scholars have invented water from something and something, from air or something. Can you show me, or can you show me water now? Can you, make water? And then scholar said, well, see, for making water, we need laboratory, and there is a procedure. But he said, well, why? You have here we have oxygen and hydrogen, mix them and it will become water. And the scholars, they repeatedly said, but we need to go to our laboratory, and there is a standard procedure, and then we will experience that water is formed. And then with a smile, Thakur Ramakrishna Dev is saying, well, the same way, if you want to experience one who has been, the source of life, but to see him among us, at least to feel, you have to come to my laboratory, you have to follow the procedure, and then with your own experience, you can see who is him. Now, with these two understanding, the definition that we know Thakurji gave to us, that if we want to seek the purpose of life, we need to adhere to the true master Sadguru. Why? Because he will take us to the God of men, Bhagwan. And at present time, he is none other than Sri Thakur Anukul Chandra. His literature, if someone just without taking his initiation wants to read, I am not on the dam sure, ocean sure, by the next day, our Joyantada will get a call from him or her that he wants to get initiated and then wants to experience. With this, I rest for the day. Thank you. Jai Guru. Jai Guru Dada, nicely explained. Now we will proceed towards the next question. That is, how does the ideology and philosophy of Sri Sri Thakur can help us properly define, or we can say redefine the goal of our life? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के आइडियोलॉजी के फॉलो करने के बाद जीवन का गोल क्या है, इसके ऊपर आलोकपात करेंगे स्थिति माँ. But due to the shorter time, I will request to Sthitima, please explain within 3 to 4 minutes. Jai Guru Ma. जय गुरु। मेरे पास जो प्रश्न आया है कि श्री ठाकुर की आइडियोलॉजी कैसे हमें हेल्प कर सकता है हमारे लाइफ के गोल को रीडिफाइन करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि गोल मेरे लाइफ का क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको बिना समझे हुए व्हाई डू आई नीड टू गेट अ रीडेफिनेशन, तो पहली चीज हो जाती है कि अगर हम जो संसार, जो सृष्टि को देखें, सृष्टि में जीव जंतु पशु पक्षी इतने प्रकार की क्रीचर्स है, इतने प्रकार की क्रीचर्स में कंसीडर किया जाता है कि जो इंसान रूपी जो ईश्वर की जो क्रिएशन है, सृष्टि है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसका पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि हमें बोध शक्ति है। हमें कहा जाता है कि वी आर द मोस्ट रैशनल बीइंग्स,
तो हम सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गुड एंड बैड, ये चीज करने की हमें क्षमता है। लेकिन बात ये होती है कि जन्म के बाद ही, जो हम इस सृष्टि में जब जन्म लेते हैं, जन्म के बाद ही हम यहाँ के जो भी हमारे पास, जो भी सृष्टि में जो भी बना हुआ है, हम इसी में फंसे रह जाते हैं कि हमें लगता है कि जो भी हमारे पास मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, हमें वो गेन करना है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा जो जरूरी हो जाता है कि पैसा, मनी, इट इज द ओनली थिंग जिसे लोग कहते हैं कि मनी इज टाइम, मनी इज पावर, मनी इज एवरीथिंग, जो हो चुका है आज की डेट में। तो यहाँ पे मुझे लगता है उस एंगल से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। मैं इस समय जहाँ पे भी हूँ, मैं यहाँ देख पाती हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं, हो सकता है लाइफ का 3 इयर्स उन्होंने अपने पैशन को दिया है, लेकिन आफ्टर वर्ड भी अपने जीवन में कोई गोल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उनके लिए एक ही चीज है, वो है कि और इनकम कैसे किया जाए, अपने डिप्रेशन ना आए, बोर्डम ना हो, इस चीज के लिए पैसा कमाना है। तब इसका एक हमारे पास जो आंसर आ जाता है कि उन्हें पता नहीं है अपना गोल ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि वहां पहुंचना है, दिस इज द ऑब्वियस जिसे हम मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उस ऑब्वियस को समझना, बोध करना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो ऑब्वियस एक ही हो सकता है जिसके कारण वो सोर्स ऑफ लाइफ क्या है, जहां से मैं आई हूँ, मैं उसको समझने की कोशिश करूँ। कोई एक दादा ने पहली बार कहा था, मुझे याद नहीं कि उन्होंने कहा, विषय के मूल कारण को जानना ही सबसे बहुत जरूरी है। ठाकुर की ये बात है। अब किसी भी विषय का, मेरे अस्तित्व का, इस जगत का मूल कारण कहाँ है, क्या है, किधर से ये हो रहा है, उस चीज को जानना। और जहां ये मूल कारण हो सकता है वो है मेरे पुरुषोत्तम, मेरे परम पिता, में उनकी सृष्टि होगी, ये सब कुछ उनकी सृष्टि है। तो उनको जानना मेरा गोल ऑफ लाइफ है। और ठाकुर को पकड़ के हम और बेहतर जान पाते हैं। हमारे शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, बुद्धि, जो भी हमें बीइंग अ रैशनल ह्यूमन बीइंग जो हमारे पास है, वो हमें प्राप्त हो रहा है। और हम समझ पा रहे हैं कि इसको यूटिलाइज करते हुए हम उनको कैसे जाने। उनको जानने का जो हमारे अंदर जो जिज्ञासा होगी, तभी हम अपने आप को रीडिफाइन कर पाएंगे, अपने गोल ऑफ लाइफ को रीडिफाइन कर पाएंगे। न बोर्डम होगी, न डिप्रेशन होगा, न कुछ होगा, और हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनेंगे। जय गुरु। Joy Guru Ma, nicely explained. To further shed light on this, I will call Pradutta. Please try to complete within 3 minutes. ओके मैम। सो स्थिति माने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आजकल जो गोल है वो है मेनली मनी सेंट्रिक, और जो सांसारिक जीवन में जो हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि हमारे पास पैसा है तो सब कुछ सुख है, तो दैट्स व्हाई गोल इज नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड। श्री श्री ठाकुर जी के पास एक अमेरिकन भक्त आए थे, तो उन्होंने श्री ठाकुर जी को पूछा था कि इफ आई विल मेक हेनरी फोर्ड माय आइडियल, सो व्हाट विल बी इट्स, व्हाई नॉट हेनरी फोर्ड बी माय आइडियल। सो श्री ठाकुर जी ने बोला था कि इफ हेनरी फोर्ड इज योर आइडियल, देन यू विल बी कैन बी ओनली बी हेनरी फोर्ड, नॉट लॉर्ड जीसस। तो हमारे जीवन के जो गोल है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, जो कि आइडियल सेंट्रिक हो सके। क्योंकि हमें पता है द हायर द गोल द बेटर वुड बी द प्रोग्रेस। तो हमें जितना भी हमारा जो लक्ष्य है, जितना उच्च रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, हमारा लाइफ में प्रोग्रेस उतना अच्छा होगा। सो द पर्सन्स लाइफ गेट फॉर्म्ड और शेप्ड बेस्ड अपॉन हिज who or what is at the center of that person's life. So if in our life our center is our supreme beloved, our Sri Sri Thakur, then our life will be more meaningful. Our life will be more, what you can say, it will be more perfect. Without any very less effort, we can be more perfect. So हमारे जीवन में, क्योंकि हम जब बोले हैं कि जो भी गोल है हमारा, उसको पहले रीडिफाइन करना पड़ेगा टुवर्ड्स द लव लॉर्ड, टुवर्ड्स आवर आइडल। सो श्री ठाकुर जो भी, क्यों श्री श्री ठाकुर, तो उसमें अगर हम श्री श्री ठाकुर जी की लाइफ में देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे, ही हैज कवर्ड मेनी फैसेट्स ऑफ आवर लाइफ।
starting from religion, starting from education, economy, philosophy, whatever, in every corner of our life, in every facets of our life, he has covered all the things. So if we follow him, if we so ठाकुर क्या थे, वो थे जो भी वैशिष्ट्य है, जो भी हमारा इनहेरेंट क्वालिटी है, उसको श्री ठाकुर को माध्यम से, श्री ठाकुर के बातें मानने से, श्री ठाकुर के बात पालन करने से हमारा जो भी अपना इंटरनल इनहेरेंट क्वालिटी है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमें श्री ठाकुर जी को ही फॉलो करना है। बहुत सारे बाधा विघ्न आएंगे, लेकिन अगर हम इष्टि चलन में उनके जो भी बातें बोला गया है उस हिसाब से अगर चलते हैं, तो we can reform our goal, we can redefine our goal, we can reach to our goal। तो ठाकुर जी की एक वाणी है इंग्लिश में, बंगाली में, इष्टि चलन थाकी यदि रुकबे ना तो दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग होय, आनबे जय उन्नति। So if you follow the words of Sri Thakur, so whatever may be the obstacles come in our path, they will be become strong, they will be become our support। So whatever be the obstacles, they will be support us and we will be successful in our life। So with this सबका मंगल श्री ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करके मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय गुरु। थैंक यू दादा, आपने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किए हैं। इस सेशन को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आई वांट टू कॉल जयंत दा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। I think it's an extremely important topic which has been addressed by our four panelists, Dr. Ranjan K. Viharada, Dr. Pradut K. Biswalda, Dr. C.C. Dasguptama, and Dr. Surujit Haldadda. So it was an extremely nice discussion which has been explained by you, and nice sanchalana by Dr. Shoma Royama. So to summarize the entire discussion, may I request respected Sri Dambarudhar Dasda, Shraddheyo Dambarudhar Dasda, SPR, Secretary of SATSANG VIHAR, Katok। मैं दादा को अनुरोध करता हूँ, दादा we are really fortunate that दादा हमारे बीच उपस्थित है, और दादा आप जो ये जो पैनल डिस्कशन का उनका आप समराइज कीजिए within 4 to 5 minutes। जय गुरु दादा। जय गुरु। Am I audible? Yes, you are audible. Very nice. Today, Dolo Utsav is being observed throughout the country with much grandeur. And Delhi Satsang Vihar is also observing the Dolo Utsav, but with a difference. Delhi has streamlined a subject, that is necessity of acceptance of an ideal, and have requested, have invited scientists, scholars, professors, and engineers from different cult of life to throw light on this subject. Puja Jatinda has opened the threshold of discussion with its diverse aspects very succinctly, so nicely, and it is his subject. If he speaks for hours together, then there will be no end to the subject. He has so vast knowledge. However, our panelists have designed some questions which are common to the minds of all the people who are not within us and who are beyond this arena of our satsang. This why accepting an ideal, the necessity of indispensability of accepting an ideal, the light was thrown by Dr. Ranjan Behera from USA. He has very nicely put to his deliberations. He told about the 5 aspects of life, optimal manifestation of life, how it is possible. It is through the Sikha and Viva, and width and depth of life can be possible through this mission only. Thereafter, Stiti Dasgupta has also hovered on the subject with all its fulfilling aspects. Then the question was why we should accept the ideal.
who should, why this younger generation are reluctant to accept this ideal. The light was thrown by Dr. Pradyut Kumar Biswal from IIIT Bhubaneswar. He very pertinently he threw light on this subject. The reason is he has thrown light that parents, teachers, and environment, these three aspects are responsible for not accepting the generation, the younger generation not accepting this ideal. Actually, if the parents are ideal centric, if the teacher is ideal centric, if the environment is conducive, then only people can accept the ideal to the heart's content, and they can enjoy their life, and they can also evolve their life to the maximum. Then question arose, why Sri Thakur would be accepted as an ideal? This light was also thrown upon by Surjit and others, and because Sri Thakur is the supreme ideal. Sri Thakur, if you go, why we will accept Thakur? If you go to a mathematician, he will teach you mathematics. If you go to an engineer, he will teach you English. If you go to a chemistry, he will teach you chemistry. But if you go to Sri Thakur, you get all the aspects of education, all the aspects of life fulfilled. So he is the omniscient, omnipresent, omnipotent. All aspects are landed in him. So Thakur should be accepted because all the inherent faculties, inherent talents, inherent aspects, inherent tenets, all evolve according to his. If we obey him, we observe him, we follow him. Therefore, Sri Thakur should be accepted as an ideal. Then also another question was put, if Henry Ford is accepted, then your life can be like a Henry Ford. If you accept Jesus Christ, your life will be just like Jesus Christ. So similarly, if you accept Sri Thakur, all aspects of life will be fulfilled. It has been proved through many aspects. Pantanand Sarkar, a great scholar who accepted Sri Thakur, he was trusted with the task of teaching some old people, some rotten people, some very raw people who do not know, all very untalented people. Sri Thakur educated him. Thakur told to grow talents. Thakur taught him such a lesson that even during his sleep, he was snoring, but his hands were working with the summation of mathematics, which was proved that even if you sleep, you give your body rest, mind rest, for some aspects which are useful for working out the sum can be made active. This is Sri Thakur. All aspects of life can be fulfilled by acceptance to him. However, very eliminating discussions were held. All people, they replied very nicely. I am indebted to the Delhi Satsang Vihar for arranging such a very nice forum, and all have been benefited. Those who 200 persons who have joined have really enjoyed this session, and I thank all for giving me also the opportunity for summation of the subject. Thank you all. Jai Guru. Jai Guru, Dada. Jai Guru. I must say, Dada, we are blessed to hear from you, Dada. Respected Sri Dambaru Dhor Dasda, and highly respected figure in our Satsang Parivar, has nicely concluded the entire discussion, which has been nicely explained by our four panelists. So with this, we are almost at the end of the panel discussion, which has been started by Shraddheya Jyotindra Mohantida
and then carry forward by our four panelists and ended with our respected Dada, Secretary of SATSANG VIHAR Kotok. I pray to the lotus feet of Sri Thakur for the well-being of you and everyone. Joy Guru Dada, Joy Guru. Joy Guru Dada. Yeah, we've moved forward. Now we will have our closing song, Samapani Songit by Gaurish Naikda, computer engineering student from ITER Odisha. Dada, please close the session with the song. Joy Guru. Gaurish Naikda. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Please start. Jai Guru. मुरली बजाए कान्हा आज नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा आज, मुरली बजाए कान्हा आज नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा आज। मुरली ने ऐसी धूम मचाई छाया नव ज्योति समार, मुरली बजाए कान्हा आज नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा आज। कान्हा आज नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा आज, मुरली बजाए कान्हा आज नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा आज। मुरली ने ऐसी धूम मचाई छाया नव ज्योति समान, मुरली ने ऐसी धूम मचाई छाया नव ज्योति समान, मुरली बजाए कान्हा आज नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा आज। कुंज कलली नव साथ सजाई, एक पपीहा गीत सुनाई, कुंज कलली नव साथ सजाई, एक पपीहा गीत सुनाई, यमुना में आया फिर से ज्वार, यमुना में आया फिर से ज्वार, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा आज। सजल नयन पन निहारे, सदियों से पल के बिछाए, सजल नयन पन निहारे,
सदियों से पल के बिछाए पूरन कराए मन की आस, पूरन कराए मन की आस। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज। मनमोहन प्रभु परम दयाला, प्रेममय से जग उजाला। मनमोहन प्रभु परम दयाला, प्रेममय से जग उजाला। प्रियतम श्री चरण के सब दास, प्रियतम श्री चरण के सब दास। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज। मुरली ने ऐसी धूम मचाई छाया नव ज्योति समान। मुरली ने ऐसी धूम मचाई छाया नव ज्योति समान। मुरली बजाए कान्हा आज, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज, नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा आज। जय गुरु। Joy Guru, Joy Guru. What a song. Joy Guru Dada, Joy Guru. On this auspicious day, I think this is the perfect song performed by Gaurish Naikda. It's really a magnificent piece of song which has been performed by Shraddheyo Dada from computer engineering students from Odisha. मैं ठाकुर जी के चरण में आपके लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। I must say before I hand over the mic to Dr. Pranay Kumar Vishwas da, हमारा जो इतना सुंदर जो slides जो बनाया, I must say we must thank Miss Nivedita Panma from she is from Allahabad but doing PhD in SN Bose Calcutta, Satyendranath Bose Basic Center for National Center for Basic Science. She has done these beautiful slides till midnight yesterday. So we must thank her on request from Shraddheyo Maheshwar da. So now I request Dr. Pranay Kumar Vishwas da to convey vote of thanks on behalf of SATSANG VIHAR Delhi. Dr. Pranay Kumar Vishwas da is an postdoctoral fellow KIT Karlsruhe from Germany. Shraddheyo Pranay Kumar Vishwas da, you have 5 minutes to convey your message. Joy Guru Dada. Joy Guru everyone. First of all, please accept my deep, actually I would say, since I am outside, so I am not in home, so please accept my apology that I am not at home, but I was enjoying thoroughly. So first of all, it was such a nice program to be witnessed, and when it is with all of you, so it's even more enjoyable for me. So I would like to thank to everyone. First of all, Jayanta has very nicely moderated this program. So thank you to you also. And as Jyoti, Jain Mohantira said, right from the beginning, I mean, he was marvelous. So we all must accept that. And the tune was always carried forward by later on different devotees who performed their bhajan, kirtan, and the panelists, all of them. They were the superb. The questions which have been discussed in today's session, it was such a contemporary, and it is very much needed for all of us to know, to
to know the ideology of Thakur, what Thakur used to think, or he is thinking in the form of Acharya Dev. So now, since it is a time, I mean, already the vote of thanks time is already here, and we are falling short of time. So I would not take much more time, but just in one word, I would say the whole program, it was splendid program, and I enjoyed it thoroughly. And I hope all of us must have taken so many things, so many teachings from Sri Thakur ideology. So please come in this kind of, we also do it in first Sunday of every month from Uttar Pradesh and Uttarakhand. So where we have all the panelists from different part of the world. They are scientists, research scholar, professor everywhere. So without your support, it is not possible. So it is very much needed that you please come on every first Sunday of month. And it is very important that you all came here today, joined. You could have gone to somewhere else. You could have spent this time with something different, but you thought to give your valuable time to us to share with all the people here in this platform. So thank you very much for that. And one important actually message, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम सुचिस्मिता शाह है. वो पीएचडी मेरे साथ ही किए है, जर्मनी से है. लेकिन अभी थोड़ी दिन पहले पता चला कि उनका पिताजी जो है, उनका एक एडवांस स्टेज में कैंसर है, और इंडिया में ये बहुत ही अनकॉमन है. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर हम सब लोग आज सुष्मिता के बगल मतलब साथ में हम खड़ा रह सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा. और ठाकुर जी के पास तो हम दीक्षा लेते वक्त ये संकल्प करते ही है. तो इसीलिए मैं यही सब लोगों को कोशिश करूंगा कि अभी जो बात हुआ है लास्ट एक महीने में, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है. हम आचार्य देव को निवेदन किए हैं देवघर में. आचार्य देव बहुत ही अच्छे से आशीर्वाद दिए हैं ट्रीटमेंट करने के लिए. उनको ये बहुत ही अच्छा लगा कि पिताजी के लिए ये ट्रीटमेंट करने के लिए अराउंड 60 लाख रुपीस जरूरी है. तो हम बहुत लोग ऐसे सोचते हैं इतना पैसे हम कहाँ से लाएंगे, तो हम वहीं पर हमारा जो जुनून है वहीं पे हमारा खत्म हो जाता है. लेकिन सुचिस्मिता शाह को हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने पिताजी को इतना अच्छे प्रेम करते हैं, और पिताजी को वो ट्रीटमेंट करने के लिए कलेक्शन कर रही है. तो हम अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सब जगह पे ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं. तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, अब अगर पॉसिबल है, अगर आपको मन लगता है कि आज छोटे बहन के साथ हम सब लोग एक साथ खड़े रह सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा. और मैं अभी सुचिस्मिता को रिक्वेस्ट करता हूँ, सुचिस्मिता तुम अगर आपका तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है अगर सबको कन्वे करोगे तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा. सुचिस्मिता, ओवर टू यू. Yes, please, Sushmita, carry on. Just request everyone. You are on mute. I think she cannot. Is she not co-host? Janjada, can you? Yeah. Technical team, please allow Suchishmita Saha so that she can speak. Yes, Jai Guru everyone. Thank you, Pranay, and thank you everyone for your help. Actually, already we are getting some help from SATSANG Europe and also SATSANG USA and Canada. And actually, my father was diagnosed on February 2nd. So immediately after the diagnosis, I came to India, and but it is like at that time also it was in very advanced stage. And also the tumor is very rare. Only 2% people have this tumor, and the treatment for this type of cancer is only the surgery. But now it has spreaded. Actually, it started from the maxillary sinus, like a part of the sinus which remains
between the cheek and the nose, this part. So it started from there and it has spreaded almost everywhere in the mouth, and it's very near to the brain, and there was no symptoms. So only a runny nose and nose block. So it itself was diagnosed very late, and now their doctors are saying it is like there is no scope for operations. Most the doctors, they don't want to do the operation, and there is only 1-2 doctor they want to do the operation, but the operation is so risky. Like they are also saying it's and also after the operation the quality of life will be very, very bad, because they will remove almost every part from the face, and there is no scope to reconstruct that that part. And actually for this particular type of cancer, operation is the only treatment available in India, because there is no chemo for this cancer. And this cancer, the name of the cancer is adenoid cystic carcinoma, and it is also not radio sensitive. Like in India, the radiation for the cancer, they are giving X-ray radiation, and this cancer cell doesn't die in the X-ray radiation. And also the cancer has spreaded that much that the X-ray radiation can't kill even like half of the cells. So the doctor said like there is another type of radiation which is not available in India, that is called carbon ion radiation. So instead of the photon, they are giving carbon ions, and they are much more heavier, so they can penetrate the cell more, and they can kill the cancer cell at least 2 to 5 times more than the photons. So there is a chance if we can treat that treatment, like we can treat the cancer with the carbon ion treatment, then there is a chance that he will get free of cancer. But the problem is that in India we don't have it, and in Germany we have it in one center, but the cost is so, like it is very costly, like minimum 60 lakh rupees. But actually we are also from a very middle class family, so for us getting 50 lakhs rupees immediately is very difficult. Like I am just requesting, if possible, any amount like will be a very big help for me and for our family. So we it will be a very, like I will be very, very grateful if you can help somehow with money, and even with prayer will be also very good. Like if you can pray for the recovery of my father to the lotus feet of Sisi Thakur, I will be very, very grateful to you all. Joy Guru Ma, Joy Guru, Joy Guru, respected Dr. Pranay Kumar Vishwasda and Dr. Shuchishmita Sahama. I must say Shuchishmita Sahama also a postdoctoral fellow in Netherlands. So जो message माँ ने दिए हैं, as a family member we must come forward. We must come forward together because she is from our satsang family. She is from our family. So I thank you, Ma, to convey your message, that you have given this message, and I am sure each of us will pray to the lotus feet of Sisi Thakur for the recovery, for the quick recovery for your father, and we will all, I must say that we should come forward, and we will let you know as soon as possible. Yes, Dada, actually the money is very, like we need it in a very emergency situation, because we have to deposit all the money there, and then only they will processing everything, the visa and everything. And for the cancer we can't like wait long, and also Acharya they've said don't wait longer because the cancer can spread, like we don't have much time. So yes, yeah, I think माँ ने सभी को, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, माँ ने हम सभी को रिक्वेस्ट किया, दिस इज ए वेरी अर्जेंट, एंड हम लोगों को सभी को बहुत ही इमीडिएटली हम लोग सब एक साथ मिल के, माँ हम सब लोग आपके साथ है. I can say that हम सभी लोग आपके साथ है, and we will do something as soon as possible. Joy Guru Ma, Joy Guru. So to Joy Guru Ma, Joy Guru. Joy Guru, thank you for your support, Joy Guru. Actually, mera Joy Guru. Joy Guru. Now I request Professor Arup Roy, Research in Finance and Business Administration from Tezpur University, to perform Joy Radhe and end the satsang with Dhani. Joy Guru Dada. Professor Arup Roy da. Professor Arup Roy da.
Is he there? Or brother, please start. Please unmute and start. Yeah, thank you. Am I audible? Yes, you are audible, Dada. Yeah, so Joy Guru to everyone. Joy Radhe Radhe Krishna Govinda Joy Radhe Radhe Krishna परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।
आ रहा है और वो आवाज नहीं आ रहा है। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषो वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम जुगो पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी की जय। परम प्रेम जुगो पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी की जय। परम प्रेम जुगो पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी की जय। परमाध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृं वंदे आर्यपितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम जुगो पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। पूर्ण सौ की जय। जय गुरु साहब जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। वी मस्ट थैंक हमारा श्रद्धेय